Hello, students. In the previous chapter, we had done discussion about the French Revolution. So, the great ideas as like freedom and equality, and what were the importance of this all in the whole European countries. We are going to see that impact of French Revolution, and mainly on that time, the Europe society were changing. Everybody wants a new transformation, new changes in their society. So mainly the three main changes which came, the three main society, the three main sections which came in that society, that were liberals, radicals, and conservatives. Let's begin with the first one, that is liberals. So these liberals, inside this liberals people, group of people, they want a change in their society. Which type of changes they want? They want that in our nation, where the religion should be tolerated. So what were the different religions are followed in that European country? It should be tolerated, it should be accepted. So this was the first demand from the liberal side. Next, the another demand, we should remember that in this they want, like if you will take one example of European country on that time, like in United Kingdom, or near this area, they were supporting the Protestant church. Other than inside, as like in Austria, England, this all area, they were supporting the Catholic church. So these type of different forms were came under this Christianity, and they all were believing on their own opinion. And there's the reason under this liberals they want that all the religion should be tolerated. The another point which we are going to discuss, that was that liberals they don't want any type of monarchy system in their country. They don't want any king or queen. Next, the third point, they want that in their country there should be elected parliamentary government, and there should be well-trained judiciary system. Next, we can say that liberal, they were not democratic. The reason was this, that they had not given importance to the universal adult franchise. They had just given importance that only that people can vote, those who having property. And they also did not want the vote for women. So these all were the demands of liberals. फर्स्ट पॉइंट, अंडर दिस लिबरल्स इन्हें क्या चाहिए था कि सारे के सारे जितने भी रिलीजन हैं उसे हम एक्सेप्ट करें. दूसरा क्या चेंज इन्हें चाहिए था कि यहाँ पे कोई भी राजा रानी वाली जो सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम, वो ना रहे. तीसरा इनका डिमांड था कि यहाँ पे वेल ट्रेन जुडिशरी सिस्टम्स हो, यहाँ पे अच्छे से न्यायालय ये सब बना हो, यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म हो. ये सारे इनके डिमांड्स थे. इसके अलावा इन्हें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इन लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तरफ फोर्स नहीं किया. इन्होंने फीमेल्स के वोट के लिए नहीं कहा. इन्होंने क्या कहा? सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार हो जिनके पास प्रॉपर्टी हो. So this all were the changes who want liberals wants. Let's move towards the next section, that is towards the another group, that are radicals. These radicals group, what they want, they were a little bit different from the liberals. How they are different? What they want, these radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. So what they want, that in our country is that those people are there, they all should get the rights for casting their vote. It means they supported towards the universal adult franchise. The next, they also supported towards the women's suffragette movement. What it means, women's suffragette movement? It means a movement to give women to right to vote, where the females got right to casting their votes. So they also demanded for this. Next, what was the third main change under the radical system? They asked for the landowner do not get property and privileges. So they thought that those already have the land owners, those who are having the property and all, so they should not get any type of advantages of this thing. To whom the advantage should get? Those who don't have anything. So these type of demands were there under the radical system. Next, another third point, as like let's discuss once again radicals what they want. जो रेडिकल्स लोग थे, जो ग्रुप थे, उनकी ये डिमांड थी कि हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, जहां सारे लोगों को अधिकार दिया जाए वोट डालने का.
इसके अलावा उन्होंने वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट पर भी ध्यान दिया, जहां फीमेल्स को भी अधिकार दिया गया वोट डालने का। तीसरा, इसके अंतर्गत उन लोगों ने जिनके पास ऑलरेडी जो लैंड ऑनर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं किया। जैसे लिबरल्स में हमने देखा था कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन रेडिकल्स ने इसके अगेंस्ट में कहा कि उनको सारे के सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए जिनके पास लैंड ऑनर हो, जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी हो। इवन उनको मिलना चाहिए मेनली जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्हें प्रिविलेजेस मिलना चाहिए। तो ये सारे डिमांड्स थे रेडिकल्स के। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड ग्रुप, conservatives. Students, I just want to tell you that please take out your pencil, open your book and just underline the main important points that will be easy for you to understand. Okay, let's move towards the conservative. These conservative people were a little bit different from the liberals and radicals. What the conservative they did, they were opposed to the radicals and liberals. So what they were thinking, they don't want to follow the thinking of the same opinion what the radical and liberals they want. When we're talking about the conservative, so on that time in past, if we will focus, so on that time, this conservatives, they don't want to change anything in their society. But slowly, when we'll see after this 18th century, they thought that yeah, change is required. But near this 19th century, they want changes in their area, but that change should be much more slow process. So near this 18th century, they don't want any change, or if there is any change, then it should be a little bit slow motion. They also supported that what happened in past, so we should respect them. So these were the points of conservatives. तो कंजर्वेटिव्स ने क्या कहा, सबसे पहला उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो भी रेडिकल्स कह रहे और लिबरल्स कह रहे उनको। दूसरा, वो उनके अगेंस्ट में थे। और दूसरा ये होगा कि 18th सेंचुरी में उन्हें चेंज नहीं चाहिए था, बट 19th सेंचुरी में उन्हें चेंज चाहिए, लेकिन बहुत स्लो मोशन में चेंज चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमारे जो भी पास्ट हैं हमें उन पे उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए। सो दिस ऑल वेर द ओपिनियन ऑफ कंजर्वेटिव्स. Let's move towards the next topic, that is industrial society and social change. Under this, when we will discuss about the industrial revolution, so on that time this industrial revolution brought a great change in whole European country, as like when industries grown up, so this all area they formed the new cities where started growing in much more rapidly way. The new industrial areas started opening, railways expanded. So these all are the great change came in everywhere. So these all changes was occurring in much more faster way, so that created a lot of problem. As like this all industrialization attracted everyone, they brought everyone together as like men, women and children with them to work in factories. So this all created problems. What were the problems? First point, as like work hours were often long and wages were poor. जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मीन्स एकदम तेज गति से जब सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री खुलने लगे, तो उस दौरान वो इतनी तेज गति से खुल रहे थे जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स आए. पहला प्रॉब्लम क्या था? वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर. एक तो काम करने का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा था, मोर देन 12 आवर्स, एज लाइक सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक. तो वर्किंग आवर्स 12 घंटे है, तो ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था उनके लिए. दूसरा, इवन वो टाइमिंग और बढ़ाया जा रहा था जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करना था. इसके अलावा उनको जो पैसे दिए जाते थे वो भी बहुत कम थे, उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी. नेक्स्ट अनदर प्रॉब्लम क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, और ये बेरोजगारी कब ज्यादा हो जाती थी? जब वहां पर इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड घट जाता था. अगर किसी इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड घट जाता है तो वहां पे उस इंडस्ट्री अगर वो क्लोज हो जाती है तो वहां पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे वो सब बेरोजगार हो जाते हैं. इसके अलावा द अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एज लाइक हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली. तो वहाँ के जितने भी घर थे और वहाँ के जितना भी सैनिटेशन सिस्टम था, सीपेज एरिया और ये सब अच्छे प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इनको इतनी जल्दी डेवलप किया गया था इस एरियाज को. तो जिसके कारण इस इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास के एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे. So finally, this liberals and radicals started searching the reason that how we can solve these all issues. So let's see how they are going to solve. On that time, so
liberals and the radical peoples, they were having some themselves the property, and they want to employ the workers that they can work in their areas, and they can collect more income, and they can expand their area. So they want a healthy and educated citizen. So for this, they supported the system, and that's the reason that many working men and women who wanted change, and they all supported this liberal and radical group for supporting them. Next, we will see what happened in the another stanza here. Like liberals and radicals, they were ready. They given the job to the workers to work in their area, and slowly, this idea came, and this nationalists also supported this idea of liberals and radicals. Now, when we will see in Europe in year 1815, on that time, there was a person in Italy. His name was Giuseppe Mazzini. What he did, he supported this Italian nationalist group, and he also written a lot of information about this nationalist, and where they given equality and equal rights to everyone, where all citizens have the same equal rights. So this demand came in everyone, and everybody supported it. So he written everywhere in newspapers, magazines. So this was the great change which came, the nationalist, which everybody started moving towards this one. Next, we are moving towards the coming of socialism to Europe. So on that time in Europe, that was socialist. So what happened to the socialists? That socialists were against the private property. Why they were against of the private property? They were thinking that this all thing, that private property those who are having, they are creating problem, they are creating social ills. So उनका क्या मानना था कि जो सोशलिस्ट का क्या मानना था कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, वो सारे के सारे वर्कर्स की उसमें कुछ भी फायदा नहीं होता। किसका फायदा होता है? मेन जिसका प्रॉपर्टी है। सो ये किसका फायदा हो रहा है? इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी एंड दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट प्रपोर्शन पे कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीजें होती हैं, अपना फायदा होता है बस। बाकी जितने भी वर्कर्स काम करते हैं यहाँ पर, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। इसीलिए सोशलिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा व्हेन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, द सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज, एंड उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैंपेन भी किए। वो क्या कर रहे थे अंडर दिस सोशलिस्ट? If you will see this question, that how could a society without property operate? What could be the basis of socialist society? So inside this we can see as like socialist had different vision of the फ्यूचर। उनका क्या विजन था, उनका क्या ओपिनियन था कि कैसा होना चाहिए देन हमारी सोसाइटी में। सो सोशलिस्ट ने बताया दैट सम दे बिलीव दैट देयर शुड बी अ आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। So students, for seeing the meaning of cooperative, let's move towards the third points here, as like these cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divided the profits according to the work done by members. तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पर लोग मिलकर के काम करते हैं और जो भी फायदा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं। तो कोऑपरेटिव्स को किसने सपोर्ट किया? सोशलिस्ट ने सपोर्ट किया। अंडर दिस वी विल सी सम मेन इंपॉर्टेंट पर्सन एज लाइक रॉबर्ट। सो रॉबर्ट ने क्या कहा? ही ऑल्सो डन इन इंग्लिश मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट ही डिड, he built a cooperative community called New Harmony in Indiana, which is located in United States of America. So he gave an idea of this, Robert. Other than this Robert, we having the another person as like Louis Blanc. He also supported the same point of view, but he told that inside this, the government should encourage this cooperatives. किसको सपोर्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कोऑपरेटिव करने के लिए। ये कोऑपरेटिव जहाँ पे वो लोगों की मदद करें और नए नए आइडियाज ओपन करें, नए नए इंडस्ट्रीज ओपन करें, जहां पे सब गवर्नमेंट हेल्प करे लोगों की। तो इस तरह के आइडियाज यहाँ पर आए। अदर दैट दिस वी कैन सी टुवर्ड्स द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन एज लाइक कार्ल मार्क्स। So this Karl Marx and Friedrich Engels, they given their own point of view under this as like
Marx argued that industrial society was capitalist. What he means about the capitalist? Capitalist, it means that own the capital investment in factories and the profit of capitalist was produced by workers. तो वर्कर लोग मिलकर के जितने भी काम करते हैं और वो सारा का सारा जो मेन प्रॉफिट और फायदा जिसको होता है उनको वो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कैपिटलिस्ट का. तो दिस कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव. अगर ऐसा रहा तो जो वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं उस एरिया में उस इंडस्ट्री में वो लोग कभी उनकी जो कंडीशन है वो कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती. तो ये जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है हमें इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह हमें क्या लाना पड़ेगा. व्हाट ही टोल्ड कार्ल मार्क्स, ही टोल्ड दैट वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो, उन्हें इन सबको हटाना पड़ेगा. मार्क्स बिलीव दैट at themselves for capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society. तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि हमें कैपिटलिस्ट को हटा करके खुद का एक सोसाइटी बनाना होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना होगा. और अंडर दिस सोशलिस्ट सोसाइटी we can work together and we can plan in that way that workers should also get the profit. So this was the फ्यूचर प्लान ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स ने ये सोचा कि हमें एक कौन सी सोसाइटी बनानी होगी, सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, जो कि सारे के सारे सोशल पीपल जो हैं वो लोग मिलकर कंट्रोल करेंगे और एक साथ सभी को यहाँ पे एक साथ फायदा होगा. किसी एक इंडिविजुअल एज लाइक कैपिटलिस्ट की तरह फायदा नहीं होगा जिसमें सिर्फ वो अपना फायदा देखेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये कार्ल मार्क्स का ओपिनियन था. Let's move towards the next point, that was support of socialism. Under this, we will see that how the socialist came in near 1817 and spread it through the European countries. Mainly, we can see the main important point as like in Germany, associations formed that was Social Democratic Party. On the other hand side, we can see as like it forms Socialist Party in France. Next, represented by strong features. They also formed the main leaders as like this. So they brought the small changes in different areas. They brought the Labour Party in Britain. So the new parties came as like in socialist group. So these all happened. Rest of the points we will continue in the next video. Thank you.